एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग सब मॉड्यूल 10 स्प्रिंग inspection and testing of spring will generally require little in the way of maintenance. Generally little way of maintenance means जो हल्का काम रहता है मेंटेनेंस में उसमें स्प्रिंग यूज होता है. those that are is in exposed area can become corrode. जो एक्सपोज एरिया रहता है वो corrode over time, and those in area of high temperature can, if they become overheated, lose their temper and cease to have the necessary mechanical compliance to satisfy the task for which they were designed. It is important that any exposed spring are carefully inspected for sign of corrosion and overheating. ये इंस्पेक्ट करता है. इंस्पेक्शन कैसे होता है? कोरोजन और ओवरहीटिंग से बचाने के लिए. कोरोजन occurs on a static spring and reduce the capacity of the load that spring can carry. कोरोजन किस चीज़ के लिए रुकावट बनता है? उसका लोड रिड्यूस कर देता है. जितना वो लोड लेने सकेगा स्प्रिंग वो रिड्यूस कर देता है बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ कोरोजन. When a spring carrying a cyclic load become corrode, the combination of fatigue and corrosion result in a serious loss of fatigue strength. Overheating is evidenced as blistering of the surface protection and, in extreme cases, a change of color of the metal due to the loss of temper. When overheating is detected, it must be assumed that the spring is not suitable for the design task. It means ओवरहीटिंग की वजह से कभी कभी जो स्प्रिंग है वो टूट भी सकता है और कलर भी चेंज कर देता है. इट मीन्स जो काम करना है हम लोग को वो काम नहीं हो पाएगा. वो स्प्रिंग उस चीज़ के लिए नहीं बना, उस काम के लिए. इन सम इंस्टेंस स्प्रिंग हैव टू बी checked against figures or graphs to prove whether they are in suitable condition to continue in service. Some check have to be done at prescribed interval wishlist. Others are done on an opportunity basis, such as when a brake caliper is dismantled for overhaul. The most common check done on a coil spring is static length measurement. जो most common check होता है वो coil spring length measurement के लिए check होता है. The manufacturer publishes the exact dimension of the unloaded spring with a small range of tolerance. The servicing technician accurately measures the length of the spring and compare it to the public dimension. कोई भी अगर टेक्नीशियन उसको सर्विस कर रहा है, सर्विसिंग में दिया हुआ है, सर्विस कर रहा है उस स्प्रिंग का, तो वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग को मेज़र करेगा और कंपेयर करेगा जो मैन्युफैक्चर डायमेंशन दिया हुआ है मैन्युफैक्चर के थ्रू. इफ़ विद इन टॉलरेंस लिमिट एंड स्प्रिंग इज रिटर्न टू सर्विस, अगर वो टॉलरेंस लिमिट तक है और उसको अगर बनाया जा सकता है तो उसको सर्विस किया जाएगा रिपीट. अनदर कॉमन चेक यूजली कंप्लीटेड इन अ वर्कशॉप एनवायरनमेंट इज द लोड और डिफ्लेक्शन चेक. दिस चेक इज डन ऑन द स्प्रिंग विच आर यूज्ड इन मोर क्रिटिकल सर्विस such as piston engine valve spring. A special test which is used to load the spring with either a compressive, tensile or a torsional loading, and a meter on the rig will display the load versus reflections figure. A series of load are subsequently applied to the spring and the relevant deflection noted. Upon completion, the figure are compared to a graph published by the spring manufacturer to establish the serviceability of the spring. If a spring fails any of this check, it is simply replaced with a reverse serviceable item. अगर ये स्प्रिंग फेल हुआ ऑल चेक्स में तो उसको सिंपली रिप्लेस कर दिया जाता है सर्विसेबल आइटम के जगह पे. थैंक यू.